Hey all, Ankit Kishor this side from Stierfleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 7950p and 18200C and already collected like 9 points of decay. Okay, and what is the plan of action from here? Very simple one actually. मैं यहाँ पे अभी थोड़ा एग्रेसिव होऊंगा. ओके यहाँ से मैं अभी रिजर्व ऑफ होने के प्लान में बिल्कुल ही नहीं हूँ. सो वेट लेट मी पुट द चार्ट. सो हियर अब ये 9 यहाँ को क्रॉस करेगा, दैट इज 52 18052. तो फिर मैं कॉल की साइड क्रेडिट लूंगा और ये 200 को मैं स्विच कर दूंगा 150 पे. ओके, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग द एडजस्टमेंट ऑन द डाउन साइड. सेकेंड वे इज कि अगर ये अब 13 के नीचे जाएगा, ओके 13 ही 12.5 के नीचे जाएगा, तो फिर मैं इसे पूरा स्विच कर दूंगा इस पे, क्योंकि तब तक आई गेस दिस विल बी ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 10 समथिंग. Okay, so this is the plan of action on the downside, and on the upside I will wait for a while, at least till it crosses like 18100. okay 18100 जब जैसे क्रॉस करेगा तब फिर मैं ये 950 को स्विच कर दूंगा, इट इज 18000 पे. ओके, और फिर उन दोनों पे मैं एसएल डालकर ट्रेड करूंगा. अभी इनमें कोई एसएल नहीं है, अगर आप देखोगे एसएल किसी में पुट है. हाँ, अभी इनमें कोई एसएल नहीं है, तो इन दोनों का भी मैं होल्ड करूंगा एंड विल ट्राई टू कलेक्ट दिस मच ऑफ प्रीमियम. बट अगर जैसा मैंने बताया, अगर वैसा कुछ मूवमेंट आता है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब इस रेंज में काफी देर रहने वाला है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट भी होगा. तो टिल देन आई जस्ट वांट टू कलेक्ट व्हाटएवर प्रीमियम इज देयर. So let's see. Yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 1:16 and still trading with this particular trade position, that is 7950p and 18250c. So in between I try to capitalize on the decays in these quite premiums, but see, market is completely sideways. Okay, there is nothing one has to do. Okay, even if someone is carrying one particular position that is giving a good decay, but मैं थोड़ा in between I try to play with very tight assets, और वो थोड़ा बहुत hit हुआ, but that didn't give any kind of headache as such. Okay, so I'm just having now this particular position which is having 2.5 point in it, which is equal to almost 4k, and I will be more than happy to close with that much. See, or see, if you're saying although new year has started, but still I'm trading with less than half quantity. It is actually less than half quantity. You know, in FINNIFTY my full quantity size is 3800 3900, but here it is actually quite less than that. And reason being, for at least 1 month or so, my plan will be to capitalize on the quantities. Okay, and in terms of points, and later on जब मेरे को थोड़ा confidence और आएगा, although I have already last year I have collected very good point even on the large sizing, but मेरे को अब यहाँ से थोड़ा I just am looking for a improvement in my own trades. Okay, और I will focus more on capitalizing on the points. Okay, जितना ज़्यादा मैं पॉइंट कलेक्ट कर सकूँ मैं उस पर ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months. Okay, I am in no hurry to book big profit in any day. Reason is very simple. See, first of all, we are having 2 expiries now a week, so I don't need to be very aggressive with my approach. First thing. Second, I will be looking to add on quantity when there would be a very good opportunity, like if some move happens in any expiries, okay, big move, and MTM slides down in negative to a big extent, for example 10 points on this sizing, 10-12 points, then if I will try to add on quantity at that point of time because of the gamma move, then it would give me upper hand on the decay and at the same time upper hand on the MTM. Okay, and also will provide me a good risk reward. तो मैं कोशिश करूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड पे ही प्ले करूं rather than the quantity sizing. ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाना is not at all a purpose for me, at least in the first like what I said, at least in the first 1-2 months. Okay, मेरा मेन फोकस हमेशा होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सपायरीज नंबर बहुत है. ओके, वी आर हैविंग 2 एक्सपायरीज, लाइक so in total at least we are going to have 8 expiries a month. Okay, what else we want? So that is why focus would be there. So now coming back to this thing, so अभी ये होल्ड करके बैठा हूँ और यहाँ से obviously रिजर्व ऑफ होने का कोई चांस नहीं है. विल ट्राई टू कलेक्ट प्रीमियम. जिस साइड भी मार्केट मूव करेगा मैं उसके अगेंस्ट साइड से प्रीमियम कलेक्ट करता जाऊंगा. फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम लुकिंग ऑन द अपसाइड ओनली, बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता और यहाँ से गिर जाता है, देन आई विल ट्राई टू कलेक्ट प्रीमियम फ्रॉम 18250 से मैं स्विच करके 200 पे जाऊंगा, देन 150 पे जाऊंगा. दिस इज हाउ आई एम थिंकिंग ऑफ. एंड द सेम गोज ऑन द अपसाइड. अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, विच एक्चुअली आई एम हैविंग बायसनेस टुवर्ड्स, so फिर 950 से मैं 18000, then 18250, then 8100. this is how I'm going to play. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update. Time is 3:31 and I booked everything with 37.5k profit here and 39k profit here, altogether 73.5k profit. So today was a very easy expiry, I would say, and it was a very good start for the financial year, okay, 23. And there was no any kind of hiccups, I would say. Okay, और कहीं पे भी गामा इफेक्ट वैसा कुछ हुआ नहीं. just this particular kind of where the gamma effect happened, but I was so out of money that that didn't hurt at all, not even for a penny.
ओके आई वाज होल्डिंग दिस 250, और अगर मैं 250 का चार्ट दिखाऊं आपको कहीं पे भी स्पाइक नहीं दिखेगा, नॉट इवन हियर। ओके, बहुत छोटा स्पाइक है, 60 पैसे का कुछ स्पाइक है जो इजीली कॉम्पेंसेट हो गया ऑन द पुट साइड। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल 250 की जगह पे 200 भी अगर लेकर बैठा होता, then you can see yourself from a low of 2.5 it made a high of 10 rupees. It's such a good IV spike that happened, but I was not able to capitalize here क्योंकि मैं बहुत रिस्क ड्रॉप था, तो मैं इतना मॉनिटर पे था, स्क्रीन पे था ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर पाया। अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली एंटर विद गुड साइजिंग हियर, but that's completely okay. See, this is how I will be trading, at least for few expiries. Okay, and I'm not in any hurry, like I said, I'm not in any hurry. Okay, और today was a very easy expiry. Okay, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, and even on this sizing of 1700 I collected good 22 points here and 24 points here. So it was a good expiry for all the non-directional traders. Okay, और ज़्यादा कुछ adjustment करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही मैंने कहीं पे quantity add किया. So this is a summary of today's trading. So I hope you had a good expiry today, and I hope all the analysis and adjustment that I do making sense to you. And if they do, then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.